तो द्रो बाद मर्ची मार रहा होगा तर रोता एक चक्का सा गबजा एक टेस्ट वीडियो में कनगा ने के बिगिन तक मन वाहद बेरसी देम तरह को मा चैन लते वीडियो में जोड़ कर ना ताकि हमें ख़ास जगह कि हम जिता जिता माना ये मकसद इदारा अमेरिका तक हम सरकप जगह शोता को में जोड़ कर ना पर मर्ची चक्का से एक टेस्ट एक ट्राई है कि कनगा ने भले एक फिल्म कि ये अहवालकारी है नहीं और ये व्लॉग हम नहीं मतलब व्लॉग है बड़ी चीज़ है अहवालकारी और व्लॉग के दरमियान है एक चीज़ है कि शर्मा जोड़ का ना और हमें वो रंगे देम तरह का मैंने मौका भी मौका ना भले माँ मर्ची मारा होगा एमश नहीं कर रहा एमश अगर उसको गूगल सर्च पे करने बेचारे और एमश एक क्रिश्चियन मजहब है एक तहर या फ़िरका ही तो गोश्त करते करने माँ मुल्क है तो असल में वंतगा कि इस जदीद दुनिया तहा या कि टेक्नोलॉजी दुनिया तहा या IT ज़माने के तहा इस हंगत आमा हजदहुमी सदिये करना जिंदगा हंगत आ यहाँ को हन्ने ज़माने के तहा मतलब तनीसी तक इस नोके दुनिया सहूलत की चीज़ हंसता है या कि टेक्नोलॉजी हंसता है या कि ईशा ईशा इन नजूर गाए ना का लगाए तिश एक बार गेश्तर मजहबियाँ ईशानी उम्र एदा तो 120 130 साल मतलब ईशानी वो ज़िंदगी है मैक्सिमम एज है और ईशानी लाइफ स्टाइल ज़िंदगी तब शे इधर दोस्ते मर्दमा ची जता आया ये हर का सारा चोना हमेशा के अलावा ये दुर्साना इंग्लिश पीपल इंग्लिश मैन को शाम मर्ची में रवा हमेशा नहीं करे ईशानी बाबत चार बारे जी भाई चुना है अमेरिका एक मल्टी कल्चर मल्टी रिलीजियस मल्टी कलर बिज़ा होर तहोरें शक्ल ज़ुबान मजहबानी मुल्क की जानक भी दुराहें जिता जिताएँ इंसानी रंग द्रोशम यक चैन ये था यक कड़ी ये था बंदों का कि यार अमेरिका गुशा भले हमें रंग बरंगी कल्चर दोद मजहब रवायतनी नियामा यक ज़ाती निंदोकें यक नस्ली निंदोकें यक ग्रोही निंदोकें के इशारा एमिश गुशां They don't connect to our electricity. It doesn't mean they can't generate their own with solar or wind power or even a diesel generator for business. They don't drive automobiles. If they have a business that requires a truck or riding lawnmowers, they can certainly lease a truck. But they would have to have a non-Amish to drive the truck. हब्द सदु 20 तो हब्द सदु सी ये नियामा आहतगें एमश के अमेरिका आहता आबाद ए अंग तक टेलीफोन मोबाइल टेलीविज़न गाड़ी और पहिया इस्तेमाल और कारमर्ज नाका नंते हैं ईशानी ज़ुबान मर्ची हम जर्मन डायलेक्ट गुशक भी बता ईशाना यदा गुशंत के पेंसिल्वेनिया डॉइच They brought with them plus about 300 years of words that got made up and some English words mixed into it. Okay, how many children they have particularly? Right now the average is right around 8.5 in Lancaster County. That's the information we were given this spring. 8.5 kids, so they need a lot of money. Mostly are they farmers? No, they're mostly not farmers. Only about 30% are in farming. The rest are in trades like home building, roofing contracting, barn building, shop owners. ईशानी वती जिंदे स्कूल के यक क्लासरूम ये तहा दुराही जमायते वंडवाना या स्टूडेंटाना वानिना. Now they've got a very high percentage of the kids staying Amish, in that 95 to 100%. It's probably above 95% really? Staying Amish. एमिश वती कल्चर और मजहब वजह चे दरहमदे मर्दुमान चे बाज पहरेज कना. एमिश विलेज आया एमिश विलेज एक मेतगेशन जोड़ करता वत कसाने मेतगेशन ज़मीन सर जोड़ करता एमिशनी ज़िंदगी लाइफ स्टाइल वड़ो डोल के चिपेम जिंदगबा शन वराक ईशन निंदा को पादा ईशन ज़िंदगी तरीक़ेकार रदोबंद शोने पमिश का दूर दराज मर्दम के शन बाबत जानक लोटा गुड़ा आ काया हमेदा
टिकट कना और ये मरदम आना बाकायदा टीच कना आना सरपत कना कि शनी ज़िंदगी चोने शनी पोशाक चोना है शनी वराक चोना है शनी हमसायगिरी चोने शनी मज़हब चोने शनी सूर चोना ये दुहें बाबत है हमें दा टीच कना सरपत कना भले पता देगा यक राह अंगता हंसते कि बसें हंसते पता बसा के मरदम टिकट का बड़ी हम मेतगा नहीं तहार होते बसा मरदम रवा होदा तो भले चूँकि रहे इस पेसरा एक अपा कुछ के वीडियो मकने ईशानी मज़हब था या सिद्के था वीडियो कनक टेलीविज़न ये विषय के समाज था चागर देता इंसानी सरपत में कि एक वायलेशन है एक वसीला है एक सबब है हमेशा का एहतरामन माशन नज़दीक वीडियो करना का ना भले अगा मुझे दूर मशीन वीडियो करना और बसा हूँ रवान को शोर पेशदार शन जिंदा ना शन तरीक़ेकार ना ब्याह Oh, I'm sorry. Yeah, it doesn't beep like they used to. Yeah. I'm gonna go on a shopping spree. Yeah. Is it done now? It's done. Yeah, Okay. we got your receipt and everything. So yeah. Thank you so much. ईशानी एक स्टोर है कि ईशानी एंटीक चीज़ बहावा गेश्तर चीज़ हमेशा जिंदा जोड़ करते का मर्दम काया हम दा विजिट करना और हम बड़ी चीज़ पर गिफ्ट या कि पट्टी की बहाजूर अंतरवान नेम कॉफी the Amish village cafe cup tea coffee cafe with cup tea so can we go right now? Yes, just go out the front door and turn left. Okay, Thank you. Perfect, thank you. Hello. How you doing? Yes. Oh, thank you. You're welcome. John. Thank you. You're welcome. Oh, okay. Thank you. Thank you. You're welcome. इसे कॉलोनी बनाता है तो हम एमएस के में नशतगं होता हमारी एक मॉडल है जोड़ करता कि दोहरा जिंदगी ये से हम लोग बने शोन है ये शनि पास वाला का मुर्गा पासा या क्यों उधर भूस हुआ ये मेरा चिकन तो ये पास एक बार चीज़ हेलो They eat only the dry one? Yeah, they get food. Okay. Asian school है, school house. ताहर है वरिशन school system से होना है. अंगः तक हमा ज़माने के बड़ा communication size और शनि school ने class 1 room school है. दुरान क्लास यक्के मतलब स्कूल था वो आना ये मॉडल बनाए थे स्कूल में तो सर्द भी ज़्यादा सर्दी है स्टोव का सिस्टम से बल्कि थी बड़ा ये कि हम और के ना दार मान करना इसमें सोचा पता था हम मैं किसानी बड़े स्कूल में मतलब ओवरऑल तो इन दुरानी चीज़ों के चाह रहे कि ये जदीद दुनिया था डिजिटल दुनिया था ये अंगला था हमारा कोहने ज़माने का सादगी ज़िंदगी था नशतगं इन क्लास हाँ यक क्लास है वन यक क्लास रूम में दुरे नहीं स्टूडेंट हाँ नहीं बस ये रवा के टाइम बुता नो रवा बस सवार पा बस सरा शद दूर माँ वीडियो करते ना वाले नज़दीक है शनी वीडियो करना नबी हेलो Okay, yeah,
perfect. Yes, thank you. All right. I'd like to ask you, please do not take any photographs or videos of the Amish people. They do not want to be photographed or videoed, and they do know what people are doing when they're walking around with a telephone like this. They will be offended if you record them or take photographs. So we ask you to please respect their beliefs and don't take any pictures of the Amish people or videos or recordings. All right, what makes them different from other Christians is that the Amish people interpret the Bible very literally. The Amish believe that the 10 Commandments prohibit photography. One of the commandments in the Bible is a prohibition. God said, do not make a graven image of anything in the heavens or on the earth. And so the Amish believe that it would be a sin to be in a photograph or a video. They believe that would be a graven image. So that's why they don't want to participate in that. So I just thought I'd explain that to you. But anyway, welcome to Lancaster County, Pennsylvania. And this is the home of over 40,000 Amish people. They've been living in Lancaster County for more than 300 years. And there on the left, you can see some Amish beef cows. Those are Black Angus beef cows. And in a moment, you'll see where the Amish people live. Now let me know if that's too much air on you back there. Okay. Okay, great. All right, so here on the right, well, first of all, you'll see an Amish man in his field with his team, and that is a team of draft horses. This is how the Amish do their farming. The Amish men use teams of horses, like Belgians, Percherons, or even Clydesdale mixed horses. Now, some Amish men prefer to use mules instead of horses. But they're all called workhorses, and they pull the farm equipment, like you can see that piece of farm machinery. The horses are pulling that through the fields. And that's how the Amish farmers do their farming. They do not use any self-driven, self-propelled machinery. Like the Amish do not use harvester machines or combines. They simply use teams of horses pulling the farm equipment. And that's how they farm. So here on the right-hand side of the road is a typical Amish farm, and this is where one Amish family lives. They live on 80 acres of farmland, and they've got a barn that's built into the hillside. That's called a Pennsylvania bank barn. It's built into a hill so that it has an upstairs where the farm machinery is kept, and a downstairs where the animals have their stalls. Now on this property they also have several outbuildings. There's a calf barn, the horse stables and buggy shed, a carpenter's workshop, the grandfather's house, and then the family's home is in the very back of those buildings. So that's where one Amish family lives. This is a typical Amish farm. Now these are private homes and private farms where the Amish live. And on the left-hand side of the road, you'll see another Amish double house. And you'll see some more Amish clothing hanging out on the wash line. On the right-hand side of the road is an Amish one-room schoolhouse. This Amish family lives on a dairy farm. They actually have 2 businesses to support their family. Now many of the Amish the typical Amish family has 7 or 8 children, but there are many Amish families that have even more children than that. 11 or 12 or 13 children are not unheard of amongst the Amish. The Amish believe that children are a blessing from God, according to the Bible. So here on the left, this family has a dairy farm. They have 50 cows, and they also have a second business, which is a fabric store. It's the big gray building on the far left of the property. You might have seen it has 3 solar panels on the rooftop to provide power to operate the cash registers. In the middle of the property is where the Amish family lives, in a double house.
The big white house is where the mother, father, and children live. The gray house that's attached to it is called the dotty house. That's where the grandparents live. And up here next to the tree, you'll see a small gray-colored booth with a window, and that is where this Amish family has their telephone. They call this a telephone shanty. This one here. And you'll notice that the Amish homes are not connected to the electric wires. The Amish are not connected at all to the electric grid. There's no electricity inside their homes or on their farms, but they do use independent forms of power like propane gas, generators, air compressors, batteries, and even solar power. Scooters instead of bicycles. And you'll see Mom's vegetable garden out front. Right now she's got some vegetables coming up. On this end of the garden are some peas and tomatoes, along with other vegetables. On the left-hand side at the dairy farm, you'll see going up the lane. If you look up their lane, you'll see a small tan-colored booth with a window in it. And inside that booth is a telephone. Every Amish family has a telephone, but telephones are not allowed inside the home. The Amish believe that a telephone would be a disruption and a distraction to their work and their family life. There's an Amish woman using a rototiller in her garden. Probably her husband is busy. Usually the Amish ladies have their husband hitch up a horse to the... Do not build churches. Each Amish family in a church district will usually have a turn to host the church service for their congregation about once a year. The Amish only hold church every other Sunday. Amish church service is 3 hours long. It begins at 8:30 in the morning and lasts until 11:30. Afterwards, there is a fellowship meal that's served by the family that's hosting church. The traditional Amish fellowship meal is a meal that is a light luncheon. It consists of snitz apple pie, home-baked bread with Amish plow, and the husband will plow the garden. 1720 نیامہ اختگیں ایمش کی امریکہ جہاں منندہ گوتی سادگی جتائی اور ٹیکنالوجی چی پہریز کنگہ مشہوراں مروچیگیں ٹیکنالوجی اور تینز گامیں زندمان نیامہ وتی پادانی ہمراہی زندہ سفر کنگ یک مزن سگو پاری لوٹی بل اے یقین کمیونٹی کہ ہزاراں سالاں چے وتی دود وتی ست کو عقیدہ بندوں کا پمشکہ ایشان وطارہ چے دنیا دراہیں مذہب و رنگ و قوم و نسلاں چے جتا داشتگ ہمیں سبب انت کہ ایشانی وتی یک بستار پشکب تگ ایشانی صحت ایشانی عمر ایشانی وشی و زندگی رنگاں یہ ثابت کرتا کہ ٹیکنالوجی آثراتی اب اوار انسانی زندگی حاطر نقصان دہ ہم ہستند این تہنا ٹیکنالوجی چی پہریز کنا بلکہ ایشانی زہگ و نماسگ الکوہل شراب سگریٹ اور نشہ وڑے ہچ چیزانی نزدیکی نکنا ہوشا الکوہل و شراب اچھی سگریٹ اچھی پہریز کننتے ہمیشہ مروچی کہ میں چکا اس ویڈیو کچھ میں چاہ رہے ایک ٹرائی ایک ٹیسٹی ہے کہ ہمیشہ نہیں بابتا یا اور شما اگر سرپدی رسے شمارا گوڑا اللہ ہمارا کامنٹس بکنی تاکہ ما دین طرح ہمیں رنگے ویڈیو بکنا اور شمارا راہ پہ دیاں ہمیشہ دوران چیزیں نہیں چارہ گوڑ زانا کا چپاد یک گپے شما اللہ میں سرپد ہوتا کہ یک قوم یک راجی اگر دنیا تھا وطرہ زندگ دارک دوتی گوڑا آوتی زندے فجارہ اور وتی حسبیہ وتی شناختہ مضبوط اور محکم داری کیا ہوتی بتائیں پہچانی بتائیں بستاری دنیا تھا بہت کرتے ہیں